Hello, welcome back to their YouTube channel. My name is Preeti Lalwani and today we are going to study about the string manipulation in PHP. But before that, we need to know about what are the strings. So strings are the sequence of a character. Means characters are arranged in a contiguous memory allocation. And another terms we can say strings are the character of array. So it is a fundamental data type used for representing text in the programming languages. They are essential for handling user input, processing data, and generating dynamic content. Why is it important? We all know that we have a lots of data in the form of character, and not every data can be in the form of integer, of course. So if we have a data in the form of integer, then we use array. But if our data is in the form of string, character, sorry, then we use string. So it is also considered as one of the data type. But today we are going to study about the string manipulation in PHP. String manipulation in PHP. String manipulation in PHP refers to the various operations that can be performed on a string to modify the string, to validate the string. It can be concatenation of string. It can be replacing in some character of the string. Basically, changing or validate a string in a PHP is known as the string manipulation in PHP. It is used in a various. It is also used in other languages too, such as in a Java, in a C++, in a JavaScript. But today we are going to study the string manipulation in a PHP only. So here we can see on the another slide, we have string concatenation and interpolation. Concatenation means to add two strings. As we can say, we have the one string of name Preeti and we have the another string in which my surname is Preeti Lalwani. So we can concatenate the two string in a one, which will be Preeti Lalwani. So here is it. You can see use the dot this symbol operator to combine two or more strings into a single string. This is useful for building dynamic string based on the data. There may be so many datas in which you want to concatenate and join together. So we can use this operator, and with the help of this operator we can concatenate the string. Counting number of words in a string. So in a string, what is there? Like here, I have also written this code by which we can understand very properly. Uh, like my name is Preeti, but for counting, we need to like count till the backslash zero, till the backslash zero, because counted numbers are like one more. And here we can see the code, such as we have the one variable string variable in a PHP. Uh, Before variable dollar sign is the string hello world welcome to PHP. But what if we want to count this string? So for that we need to use this str underscore word underscore count. With this we can count the number of string. Okay, such as let us understand with the simple example as my name PRITL. So Preeti, PRITL. So how many words are there? PRITI. There are 5 words. So we can count it by simple like str underscore word underscore count and variable name. In this variable name you can give any string, like in the double quotes we can write our string or some sentence or whatever we want to give. And if we use this before this particular variable, and here we have another variable in which the value of count will be stored, and then for printing we use echo number of words in the string, और फिर हम इस वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे. Simple. Another thing we have regular expression and string manipulation. Pattern matching. Another one is function. Regular expression provide a powerful way to search for and manipulate string based on complex patterns. They can be used to validate data, extract information, and modify text in the various forms. Function. PHP provide function like break underscore match. Here you can see another function replace. Means PHP has a wide range of like functions by which you can manipulate the string, like replacing a number or to match something, to find a character, particular character. We have another string accessing another manipulation thing is individual character. We can like
manipulate particular individual character or can change it. Like use the sub str bracket. In this bracket, we need to write or give the particular character जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक पोर्शन जो है वो स्ट्रिंग का चेंज हो जाएगा. कैरेक्टर मैनिपुलेशन, कि हमें पूरा कैरेक्टर ही चेंज करना है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही रिप्लेस करना है. सच एज वी कैन सी कि हमें कोई पूरी स्ट्रिंग है, जैसे माई नेम इज अदिति लाइक लालवानी, बट मेरा नाम तो अदिति नहीं है ना, मेरा नाम तो प्रीति है. बट फॉर दैट आई नीड टू चेंज, जहाँ जहाँ अदिति लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे मुझे प्रीति करना है. तो इस तरीके से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके ही कर सकते हैं. इसके अलावा तो ये चीज अगर कोई बड़ा पैराग्राफ हो तो हमें काफी टफ पड़ सकती है. Splitting and joining strings. Like we can split the string. As I have said, I am the student of BTech in Acropolis. So if I wanna say the particular thing that I am the student of BTech, तो मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए. इन एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मुझे नहीं बताना, तो वो फिर मैं उसको स्किप कर सकती हूँ, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकती हूँ टू फॉर्म्स में. या फिर आप आपकी तरफ से भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. जॉइनिंग, अगर ऐसा मान लीजिए मेरे पास, मैंने ये एग्जांपल रख लिया. लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीटेक सीबीएसई इन थर्ड ईयर, बट आई फॉरगॉट टू like join third year. Then I have the another string in which third year is written, so I can join these two string together. As it is quite similar to concatenation, but it's a different formatting. We can format the string, use this printf bracket function to format string in a specific way. This allows you to control alignment, padding, and other formatting options. We have the string, like I have written the paragraph, and I need to format that. So for that, I need not to waste my time in formatting, padding, and alignment. I can use the simple function spring sprint f sprint f, और ब्रैकेट में हम वो जो हमें अलाइनमेंट देना है उसको हम इसके अंदर यूज कर लेंगे. आई हैव रिटन द कोड, जो मैं अभी आपको बताऊंगी इसके आगे. तो इस तरीके से हम जो है वो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. अभी हम आगे भी देखेंगे, कुछ और भी हमारे पास फंक्शंस हैं. We have another function for interpolation of string. Interpolation of string means to interpolate something, some character in an array. Suppose if I take the example of my name, so I have written the name Preet. I also like to write Preet sometimes. तो अब मुझे प्रीति उसको करना है बिकॉज इट्स माई ऑफिशियल नेम. तो अब मुझे आई जो है वो उसे एम्बेड करवाना है. तो उसके लिए हम ये इंटरपोलेशन ऑफ स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर हमें स्ट्रिंग में इंटरपोलेट करवाना है तो उसके लिए ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. अनदर फंक्शन वी हैव केस कन्वर्जन और ट्रिमिंग. केस कन्वर्जन मीन्स होता है यूज एस टी आर और लोअर. लाइक इस फंक्शन को हमको इस तरीके से लिखता है. हियर यू कैन सी आई कैन यूज द पेन, लाइक ये आप देख सकते हैं कि अगर हमने ये एस टी आर ओ एल ओ आर ऐसा कुछ लिखा है तो इससे क्या होगा, टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस, ये स्ट्रिंग को लोअर केस अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है. अगर हमने इफ यू हैव रिटन फंक्शन this, if we have used this function, so it converts it to uppercase, and these functions are helpful for standardizing text or making comparisons. Trimming का मतलब होता है कि remove leading or trailing white spaces, like there are some extra spaces or white spaces in our string. So using the function trim bracket, we can remove the white spaces that are in our string. This is useful for cleaning up user input and ensuring consistent data format. So sometimes we don't need to waste our spaces. So for that we use the trim function. तो उसके लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है ये. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. Calculate the length of string. Okay, as I have said earlier, counting the string, so that which is quite similar to the length of string. But in a counting, we count the character, like how much character I have used in my particular string. But in the length, we calculate the length of a string, which can be calculated. Okay, the calculated length is then stored in the variable $length. Okay, so it is the function strel. Here there is example I have teached. String, there is a variable in which I have written hello world $length. There is another variable in which I have used the function strlen, and bracket
In that particular bracket I have uh, used the variable. जिस वेरिएबल में वो जो पहले वाला डेटा है वो लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से फिर हमने प्रिंट करा दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, अरे ये मार्कर क्यों नहीं आया, ये जो लेंथ है ये हमने लेंथ यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। Replacing text within strings. Now you wanna replacing some text, as we have seen a movie like Three Idiot, in which what happened, the Amir Khan has replaced some of the character. Like I hope you all remember about this. So yeah, we don't need to do that. But here you can do. We have a one variable, in which one variable we have used. We have written the characters like hello world, welcome to PHP. And if one of the my friend don't like PHP and don't like PHP, so he wanna replace new string का एक variable हमने लिया str replace, ये function हमें use करना है, and this function is responsible for all like replacing things. Hello world universe string, तो modified string डॉलर न्यू स्ट्रिंग, और वो क्या हुआ कि वर्ल्ड को हमने यूनिवर्स से कम बदल दिया। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप पीएचपी को बदल सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, पर मुझे तो पीएचपी पसंद है, मेरे फ्रेंड को नहीं पसंद, तो उसने वो ऐसा भी कर सकता है। वर्ल्ड और यूनिवर्स तो एक ही बात है, अगर आप सिनोनिम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ में आती है? ओके, आई होप यू आर गेटिंग my points, what I wanna say to you. Reversing a string, like now we wanna reverse the string, as there are so many people who like I have one of the very good example that I want to give to you all. There are some people who take reverse name in their particular id, like, or in the password too. For reversing the string we use so many things, like we have a lot of data, there may be some data we need to reverse them, and it may be in the form of character. So for that we use a reverse string. We cannot apply like swapping, and by that we reverse. I hope you all know the technique of a reversing, but utna lamba it is a time consuming, no? So if we have a built-in function then we should use it. So today we are discussing about strrev. It is the function. Oh, again I forgot to use this pen. Str, this is the function, and in this function you have to take the name of variable. This variable में ये सब कुछ हमने लिखा था, फिर हमने नया वेरिएबल लिया, we have taken the another variable, we have used this function, as in every time we do that we have used this function, and in this function we have put down this particular variable, and then what happened, this string has been reversed. Splitting strings, we can split in two forms, hello world, like hello world has been split. तो फॉर दैट वी नीड टू यूज जस्ट अ सिंपल फंक्शन एक्सप्लोर्ड ब्रैकेट, और वैसे ही यूज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक वेरिएबल में स्ट्रिंग ले लिया और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने नया, देखो हमने एक वेरिएबल लिया उसमें हमने पूरा स्ट्रिंग रख लिया, फिर हमने एक अनदर वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के बाद हमने फंक्शन लगाया, और वो जो पहले वाला वेरिएबल है उसको हमने ब्रैकेट में लगा। php str split, oh again splitting, we have discussed splitting function. Oh, I'm so sorry. No, स्ट्रिंग लेंथ, किस लेंथ से हमें स्प्लिट करना है ये वो है, और इससे पहले हमने सिर्फ स्प्लिट करने का देखा था कि दो अलग अलग अगर कैरेक्टर है तो उसको हमें स्प्लिट करना है, इट इज अ डिफरेंट, ठीक है। तो ये अलग है, इसको अगर हमने बोला कि हमें पर्टिकुलर इस लेंथ से स्प्लिट करना है तो वो उस लेंथ से स्प्लिट करेगा, इसका जो सिंटेक्स होता है वो अलग होता है, str_split स्ट्रिंग कॉमन लेंथ, इट इज नॉट सिमिलर टू दैट, ठीक है। वो मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि आपको भी ऐसा लगा, आई वांट टू से दैट इट इज नॉट सिमिलर, it is different. So it is a different because of we have to mention the length here in the syntax. It is written that कि आपने ये करना है. What happened? Slide hasn't changed. Okay. I hope you got it. UC first. अपर केस को हमें फर्स्ट करना है कि जितने भी इसमें क्या होता है यूसी फर्स्ट में कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू द अपर केस, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर का जो फर्स्ट है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूसी फर्स्ट विच कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस, ओके।
UC words. There is another function. UC words. UC words convert the first character of each word in string to uppercase. I hope you got it the difference. Best practices for efficient and secure string manipulation. ठीक है तो क्या होता है इसमें efficient and secure string manipulation are essential to ensure the performance. अब हम मैनिपुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमें मैनिपुलेशन करते वक्त कुछ प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होता है जो कि चीज़ों को सिक्योर बनाती है. तो उसके लिए आई हैव मेंशन्ड सम पॉइंट्स जो कि नेसेसरी है आप लोगों को जानने के लिए. तो पहली बात क्या, यूज स्ट्रिंग बिल्डर. हमें स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करना होता है. When concatenating multiple string, use a string builder object instead of repeatedly concatenating string with the plus operator. String builder is a more efficient as it avoids necessary string copies. आप लोगों ने suppose string को concatenate करना है तो again and again अगर हम वो same method follow करेंगे so वो security को भी harm करती है और उससे जो आपकी efficiency है वो भी कम हो जाती है. So for that we need to use the string builder. Another thing we can discuss, avoid excessive string manipulation. We need not to use excessive string manipulation क्योंकि ज़्यादा भी हमें नहीं करना है. ऐसा नहीं कि फंक्शन है तो बिल्कुल यूज ही किए जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से भी ये हार्मफुल हो सकता है और मतलब नहीं करना चाहिए. करना चाहिए, फंक्शंस है तो यूज करना चाहिए बट हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. बी माइंडफुल ऑफ कैरेक्टर एनकोडिंग. तो Ensure that you handle character encoding properly. हमें character encoding का ध्यान रखना है. Use prepared statements for database operation. हमें database operation का भी ध्यान रखना है. When interacting with the database, use prepared statements or parameterized queries to prevent SQL injection attacks. ठीक है. Avoid concatenating user input directly to SQL queries. We need to we need to alert about avoid concatenating user input directly to SQL queries. हमें ऐसा नहीं करना है. Keep up with security updates. We need to get updated always as we are the engineers, so we need to stay updated with the latest PHP releases and in fact about every languages. If we are like working in the Java, we are working on the C++, so we need to keep updated ourselves that what are the best practices and best approach can be that can help us to be up. Last but not the least, let us discuss about conclusion. Conclusion means what we have studied. So we have seen so many string manipulation techniques in the PHP. Functions like which can concatenate the string, search for help, function that help in a searching, function that helps in replacing the particular character, splitting, formatting, case conversion on a string. By leveraging PHP string manipulation functions, developer can perform complex string operations efficiently. It can save your time, it can help you if you have data in the form of character. Of course, we use it as in the form of data structure a string, but for reversing, for searching, for concatenating, we need not to write so many programs. We have built-in functions, so with the help of that, we can manipulate it. But before that, we need to mention some things that I have mentioned earlier before this slide. String manipulation is essential for validating and processing user input, ensuring data integrity, and handling textual data efficiency. So, thank you so much, everyone, as you have given your time. Okay, thank you so much, everyone. If you have liked this video, so please like it. And for more videos, you can subscribe to our channel. Thank you so much. Okay, bye bye.